Individual stock return and risk. This is our module, and this is the second part of our discussion on this topic. 130th module of Financial Management course. Here, we will be talking about the calculations of stocks return and risk. And we'll see that how the statistical formula that we have talked about are actually applied. हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का डेटा होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम मीन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हमारे पास किस तरह का डेटा होना चाहिए जिससे हम रिस्क या स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो हियर वील बी टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. और मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क ऑफ द स्टॉक की बात कर रहे हैं. लेट्स हैव अ लुक at a set of data that we have. In this data set, we have got 3 columns. The first column shows various returns which were earned on that stock that we are considering for our calculations. And the second column is of the probability of occurrence of that return. यानी probability of occurrence of return कैसे calculate की जाएगी? It is by considering the frequency of occurrence of a particular return and dividing it by the total number of observations. यानी for example, अगर हम पहली value को लें which is -0.1 यानी -10% और 10% loss. तो 10% loss की probability अगर 0.05 है, इसका मतलब ये है कि 5% of the total observations showed that the return was -10%. और इसी तरह अगर हम 0.09 की वैल्यू को ले लें which is 9% return, तो इसकी probability 0.3 यानी 30% है. यानी 30% of all the values that we considered showed that the return was 9%. तो इन दोनों कॉलम्स की मदद से हम सबसे पहले अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी मीन या एवरेज कैलकुलेट करते हैं. एंड द फॉर्मूला एंड द कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल. ऑल वी नीड टू डू इज टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ रिटर्न विद दैट रिटर्न. मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट हुई है, यानी हर रिटर्न जितनी मर्तबा हमारे पास डेटा में मौजूद था उस नंबर को हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया. एंड इफ देयर वाज अ लॉस वी हैव गॉट अ नेगेटिव वैल्यू. तो इन द थर्ड कॉलम वी सी दैट आर मल्टीप्लाई बाय पी, दैट इज द रिटर्न मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, शोड negative values as the first one and the second one. But then afterwards, because we have got profit amounts in the return, all the values are positive. All we need to do is then to sum up this column. यानी हम average के column को जब sum करेंगे तो जो value हमारे पास आएगी ये mean या average value है. And this is the value which is our value of expected return. Here this value is 0.09. We can express this value as percentage. और अगर percentage करेंगे इसको 100 से multiply कर दें, then the answer will be 9%. So in this data the expected return is 9%. Now let's move forward to calculate and to see the calculations of standard deviation or variance. Again we have got the two columns of return and their probability same as we have seen in the last slide. But the third column is actually the calculation of standard deviation, which is initially the calculation of variance. अगर आप इस third column के अंदर फॉर्मूले को देखें तो ये है कि हम R minus R bar या एवरेज रिटर्न को कैलकुलेट करके और उसका स्केयर ले रहे हैं.
and whatever is the answer, we are multiplying it by P. That is R minus average return, square of it, and then it is multiplied by its respective probability. So for example, the first value which appears in the third column is 0.001805 is the result of the calculation, यानी -0.1 में से हमने माइनस किया 0.09 which was the average return, और इसका जो आंसर आया उसका हमने स्केयर ले लिया. यहाँ पर एक और बात जो बहुत अहम है और जहन में रखने वाली है कि जब भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू का जब स्केयर लिया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज इन मैथमेटिक्स अ नेगेटिव value multiplied by another negative value gives us a positive result. So when we sum up this third column, we get an amount of value which is the value of the variance, that is 0.00703. But to calculate the amount of risk, we have to take the square root of this value. ये जो variance हमारे पास आया है, हम simply इसका square root लेंगे तो हमारे पास standard deviation की वैल्यू आ जाएगी, which is the value of risk, and in this case standard deviation is 0.0838, or if we want to convert it to percentage, we have to multiply it by 100 and it gives us 8.38%. Now, concluding this discussion, let's see that how would we actually explain it. हम इसे कैसे शो करेंगे कि ये रिस्क या ये रिटर्न जो हमने कैलकुलेट किया है ये क्या है. हम ये कहेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट पर जिसका डेटा हमने रिटर्न के कॉलम में यूज किया है, इसके ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न 9% होगा, और इस एक्सपेक्टेशन से हमारा एक्चुअल रिजल्ट जो है वो 8.38% डेविएट कर सकता है. यानी हम यूं कहेंगे कि अगर हम 8.38 को 9% में ऐड कर दें तो 17.38% हमारा मैक्सिमम रिटर्न हो सकता है, और अगर 8.38 को 9 में से माइनस कर दें तो 0.62 हमारा मिनिमम रिटर्न हो सकता है, और हमारा एक्चुअल रिटर्न इस रेंज के दरमियान कहीं फ्लक्चुएट करेगा. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न and the risk of an individual stock.